Chapter 18 Bricks and Bridges. Key points. Bricks. Bridges. A bridge to cross stream. Tools used in construction. Types of bridges. Buildings are very big and strong. They are made of different kinds of materials which are collectively called building materials. In this chapter, we will study about them. Bricks. Bricks are one of the chief building materials that have been in use for quite a long time now. They vary widely in size and format from small to large. The construction of a wide range of buildings from housing to factories, tunnels, waterways, bridges, etc. are all possible because of bricks. To prepare bricks, clay is dug out from the ground and mixed with enough water to allow it to be shaped to form bricks. ईंटें सबसे प्रमुख निर्माण सामग्री में से एक है, जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। इनका आकार और प्रकार छोटा या बड़ा हो सकता है। घरों से लेकर फैक्ट्रियों, सुरंगों, नहरों, पुलों आदि के निर्माण में इनका उपयोग होता है। ईंटें बनाने के लिए मिट्टी को जमीन से खोदकर निकाला जाता है और फिर उसमें इतना पानी मिलाया जाता है कि उसे आकार देकर ईंट बनाई जा सके। Tools used in construction. Apart from bricks, there are various tools that are used in construction. Let's learn about them. Hoe. This is used to dig the ground and to place mortar in headpan. Headpan. This is used to transport material. Masonry trowel. This is used to spread mortar. Measuring tape. This is used to measure the length and breadth of the walls. Plumb bob. This tool is used to check the vertical alignment of civil work. Concrete mixer. This is used to thoroughly mix the concrete at site. Chisel. This is used to remove excess or waste hand concrete. Earth rammer. This tool is used to level the ground. Hand saw. This tool is used in woodwork and shuttering. Drill machine. This tool is used to make holes into or through metal, wood, bricks, etc. Bridges. The bridges were created to pass over the obstacle of small caverns, a valley, a water body, or other physical obstacles. The first bridge was believed to be made by fallen log, which was placed on the stream naturally and was used to pass without using any boat, skiff, etc. पुलों का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि घाटियों, नालों, नदियों या अन्य प्राकृतिक बाधाओं को पार किया जा सके। पहला पुल शायद एक गिरे हुए पेड़ का तना रहा होगा, जो प्राकृतिक रूप से किसी नाले पर गिरा और लोगों ने उसे पार करने के लिए उपयोग किया। Types of bridges. Man developed the idea and constructed various types of bridges, such as arch bridge. The arch bridge is one of the oldest types of bridges. Arch bridges are arch-shaped. The earliest known arch bridges were built by the Greeks. Example: the Teesta Bridge in Sikkim is one of the oldest arch bridges in northeast India. Cantilever bridges are built using. ये सबसे पुराने पुलों में से एक है। इसकी आकृति मेहराब जैसी होती है। उदाहरण: सिक्किम का तीस्ता पुल, उत्तर पूर्व भारत का एक पुराना आर्च ब्रिज। Cantilevers. Cantilevers are horizontal beams that are supported on only one end. Most cantilever bridges are to cantilever arms extending from opposite sides and meeting at the center. Example: Havda Bridge or Rabindra Setu is India's biggest cantilever bridge. Cantilever Bridge. ये पुल एक सिरे से सहारे वाले क्षैतिज बीमों से बनाए जाते हैं। उदाहरण: हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज। Suspension bridge. Suspension bridges are suspended from cables. The earliest suspension bridges were made of ropes or vines covered with pieces of bamboo. In modern bridges, the cables hang from towers. Example:
The Lakshman Jhula near Rishikesh in Uttarakhand is a suspension bridge. Suspension bridge. ये पुल रस्सियों या तारों से लटके होते हैं। पहले ये रस्सियों और बांस से बनाए जाते थे। उदाहरण, उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला। Cable stayed bridges. Cable stayed bridges are similar to suspension bridges. They are held up by cables. However, less cable is required and the towers holding the cables are shorter. Example, the Vidyasagar Setu in Kolkata is the longest cable-stayed bridge in India. It is made of steel and reinforced concrete. Cable stay bridge. Cable stayed bridge. ये सस्पेंशन ब्रिज जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें कम केबल्स और छोटे टावर होते हैं। उदाहरण, कोलकाता का विद्यासागर सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज। Girder bridges. Girder bridges are made of beams called girders. This bridge is called a flyover when you use it to cross over roads. A pedestrian bridge is also a beam bridge. Example, New Delhi has a number of footover bridges, FOB, that are used by pedestrians to cross over highways. Many different materials are used to make bridges. Wooden logs, plants and ropes were the earliest materials used for making bridges. These were replaced by iron, stone, bricks and cement. Today, bridges are mostly made of reinforced steel. Girder bridge. इन पुलों को बीम ब्रिज भी कहते हैं। जब ये सड़क के ऊपर होते हैं तो इन्हें फ्लाईओवर कहते हैं। उदाहरण, दिल्ली में कई फुटओवर ब्रिज है जिनसे लोग हाईवे पार करते हैं। ध्यान दें, पहले पुल लकड़ी, पौधे और रस्सियों से बनाए जाते थे। बाद में लोहे, पत्थर, ईंट और सीमेंट का उपयोग हुआ। आजकल ज्यादातर पुल रीइंफोर्स्ड स्टील से बनाए जाते हैं। A bridge to cross stream. In Batpura village, a small stream flowed and acted as a barrier for villagers as they needed to cross it to reach the nearby town Khali. Khali was developed and had school, government hospital and many other such facilities. Champa, Rani, Munya and Anju studied in class 4 of Manohar Devi Inter College in Khali. They also crossed the stream daily to reach their school. They all travelled in a boat to cross the stream. Many times, in unfavourable weather conditions like rain, storm etc., they had to skip school due to which their studies suffered a lot and this was a major problem. एक पुल जो नाला पार कराए। गांव बटपुरा। यहाँ एक छोटा नाला बहता था जो गांव को पास के कस्बे खली से अलग करता था। खली में स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं थीं। चंपा, रानी, मुनिया और अंजू कक्षा 4 की छात्राएं थीं और रोज नाव से नाला पार करके स्कूल जाती थीं। बारिश और तूफान जैसे मौसम में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता था। Then, Ram Bahadur, the mason, came up with an idea to build a bridge over the stream. He collected bamboo sticks, grass pads, nails, hammer, wooden logs and made a bamboo bridge with the help of villagers. This bridge proved very beneficial to the villagers. They used it to cross the stream in no time and in all weather conditions. This construction of bridge made the lives of villagers and the children very easy and saved their money on boats. समाधान। राज मिस्त्री राम बहादुर ने बांस, घास के पट्टे, कील, हथौड़ी और लकड़ी के लट्ठों से गांव वालों की मदद से एक बांस का पुल बनाया। परिणाम, अब गांव वाले हर मौसम में आसानी से पुल पार करके खली जा सकते थे। बच्चों को नाव का खर्च नहीं देना पड़ता और पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होती। निष्कर्ष, ईंटें और पुल हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। ईंटों से इमारतें बनती है और पुलों से दूरियां कम होती है। उचित उपकरण, सामग्री और ज्ञान से मजबूत और उपयोगी निर्माण संभव है।